Welcome, everyone. A warm good evening to all of you. Today's open discussion is going to be about identifying green flags in relationships. And we talk about red flags so much, but we barely talk about what green flags could actually look like. Although we have covered it in many of our calls, we talk about it all the time about healthy relationships, but we felt that a specific topic to this would be good. Cool. So a few of you are joining us for the first time, I guess. So in these open calls, we keep an open conversation, and all of you are invited to participate. And whenever you want to say anything or ask a question, you can just raise your hand, and we will call your name. So let's move ahead with the conversation, identifying green flags in relationships. So when we talk about red flags, these are the red flags which give us a warning signal, early warning signs when relationships when they seem to take turn in the wrong direction compared to what we have desired sooner or later, right? So they are like early warning signs. And in the same way, when we talk about green flags, these green flags help us identify, healthy relationships, which relationship could actually be good for us, right? So what happens with us that why we oversee red flags and even green flags is that we tend to naturally get attracted towards familiar patterns in lives. Anything, even if it is just drama or chaos, if we know how to handle it, we feel more comfortable with that, right? And in the last call we talked about the red flags. You guys are um, in this call, so I would also say that please visit that call as well and listen to it once. And we oversee these red flags, and why we do that we have discussed in that call in more detail. We also oversee these wonderful green flags at times because they seem to be very unknown, right? A territory where somebody so healthy comes to us and we feel that, ऐसा कैसे हो सकता है? How is this possible that this person is talking so normally? He's so normal, she's so okay. How can somebody be so okay? So because we have not experienced that in our lives, we continue to see people through our own filters of what we have experienced. And that is why it's very important that we bring into awareness what could be these beautiful green flags in relationships. So nothing much in this topic to add from my side. I would actually first love to know from you guys, what do you think a green flag could look like? In your experience, what green flags have you seen in any healthy relationship that you have seen? Or just what do you think it could be? So over to you guys. Any of you would like to share? Hmm. Okay. So one thing I can say that when we talk to so many people and so many different calls, and we ask, especially women, that what was good in this relationship, and they are like, mm, this person used to make me feel comfortable. This person used to be my emotional support system. This person used to listen to me, talk to me, be with me sometimes. So. mm a lot of times what happens that we don't have the discernment to understand what actually green flags are, so we continue to see the breadcrumbs in relationships as green flags, the little bit here and there that we get. So the analogy that Akarma uses for this is very nice. I'm going to use the same. So if you go to buy a car, you don't just buy a car, right? Because it just
um, works, right? The car is running, so you don't just buy it for that, right? That's the basic condition of the car. So these are some basic things which are ought to be there in relationships, right? Which are natural. If they are not there, then there is no point of having those relationships. And yet people keep giving these excuses that, but even this was there, this little bit of here, this little bit of there, and we keep accepting, breadcrumbs all the time. So breadcrumbs are not green flags. And a little bit of things that you get here and there are good. I'm not saying they are not good, but they're certainly not in the category of green flags. So, what do you guys think could be the signs or attributes of a healthy relationship? So, if you cannot think of it in terms of green flags, it's okay. Just you can talk in terms of health in relationships. Yes, Amrita, go ahead. Like I had a good relationship with my sister-in-law. She was the one who was always used to encourage me in some time, quite some time, in some situations. Like whenever I have any problem, I go to her. She used to guide me in such a way that I feel maybe I'm not seeing the problem in that way. So she was my support then. Whenever I needed any uh, guidance or any kind of answer for my problems, I feel that is a green flag. Okay. Yes. Yes. Yeah, being able to share your perspectives and get perspectives from somebody, encouragement is, yes, a green flag. Great, great. Good, Amrita. Yes, Seema, you would like to share? Yeah, am I audible? You are. Okay, I want to first say sorry if you could hear too much of noises because my son's friends are over. So they are having a good time. So sorry about that. So if I say a red flag is supposing a lack of trust in a relationship, for me the green flag would be where I could be honest, be vulnerable, and able to trust the person, and I'm able to hold my healthy boundaries and have my space to express and speak my truth, and which is vice versa for my partner also. For me, that is a green flag, and where I feel very secure in the sense that I don't feel that I have to be like scared, or I have to be like there has to be like a lot of limitations that I cannot do this, that. But at the same time, I feel safe and I can be myself. And also that uh, I, with along with my partner, can make decisions, which is like a couple goal kind of a thing. And as an individual, also, I'm able to make the decisions. That's all I wanted to share. Thank you. That's perfect, Seema. You actually covered a lot of points in this. Yes, being able to be yourself, being able to be authentic, vulnerable, make decisions together, and also being able to make decisions individually, and giving each other space. And so basically it's a very beautiful mixture of being together, and yet in that togetherness being able to give each other space. So wonderful point, Seema. Thank you. Yeah, anybody else? Sanyogita has her hand up. Sanyogita, you wanted to say something? Yeah, I she has covered one of the points, that is trust, but I also feel mutual respect is very important. Mutual respecting each other, having trust in one another, and having that liberty to be yourself for each both of them, as in they don't want to change the other person in any way. That is also very important, I feel. Absolutely, absolutely. Being able to accept each other, for Yeah. what
they are. Yes, yes. Uh, it could be like if we bring it to a point, I think it would be like coexisting as a couple and as individuals, right? Like that makes sense to me. Yeah, absolutely. Coexisting as a couple, I mean, you mean as a team, right? Because there are so many things which happen together in, relationships. So being able to take things together, but also being able to take them individually. And also, this point reminded me of a point where, there is this role that shifts. So it's not that, the whole burden falls for one thing on one person. So they have very clearly defined roles for some things, and they also have clearly defined ideas that both of them can do different things and take charge of, daily chores, or maybe kids, or maybe things, or maybe, if it is a new relationship, then in that case, initiating conversations or travel plans or all of these things. So there could be a mix of, defined roles which are very clear, but there is always also this ability to take charge for both the partners. Yeah, yeah. Yes, Rupali. Hi, Anamika. So actually, I have a question. I'm not able to frame it correctly, so I'm just going to give an example, and maybe you can then share. So it's like I was dating a guy, and everything was good, and it was all very beautiful and good and everything. But then somewhere I thought instead of a green flag, I thought that maybe it is fake, and there might be some wrong intentions or something else, some different motive behind all this. So I just thought leave it, and I just said no and everything. But basically, it was all that I wanted. But then I thought that it is a red flag, although everything was good. So how can we differentiate whether it is really a green flag or it's my fear that is telling that it's not a green flag? Hmm. I, that's a good question. I want to ask a question to you and to everyone to answer this question. That might make it clear. So, when Anamika was asking, many of you said that you want to be, you want to trust, you want the other person trustworthy, trust you, or be vulnerable with them, and all those things. So that's good that you said all these things. But my question is, how do you know? How do you know that you can be vulnerable with this person? So, so what will tell you that you can? So you want to be, but then how would you know that you can be with this person? So what will tell you that I can trust this person or I can be vulnerable with them? Obviously, it's not that the other person will tell you that you can trust me or you can be vulnerable with me and then you will believe their words. Most likely, that's not going to happen. Um, so it's not that you'll just fall into that thing by someone telling you you can trust me or you just be vulnerable. So then, what is it that tells you that you can trust the other person and you can be vulnerable with them? Yes, Deepti, you want to say something? I think clear thing in this is कि actions should meet the words. I mean the person मतलब everybody says I'll do this, I'll do that, but the actions should actually match. Okay, but in order for any action to match, बॉल कहीं से तो रोल होना स्टार्ट, वो एक्शन कहाँ से आएगा? So आप ये बोल रहे हो कि you want to be vulnerable with the other person, but right now you are not being vulnerable with the other person because you are waiting that can I first see whether his actions and his words match. So what exactly are you waiting for? आपने कुछ start तो किया ही नहीं अभी तक. So what actions are you evaluating here?
Yes. I can't hear you. I too No, cannot actually, I hear. didn't say anything. Okay, I okay. didn't say anything. I was actually, I generally answered for your question, not in particular context or any particular situation. But like we are discussing, so just like since this discussion is going on, so just try and answer it. So you said that actions will tell me, but actions तो तब बताएंगे ना आपको जब कुछ हो रहा होगा. तो अभी तो काइंड ऑफ डेडलॉक है ना, एक मतलब सिचुएशन तो अभी हॉल्ट पे है ना, कि यू आर वंडरिंग कैन आई बी वल्नरेबल विद दिस पर्सन. The person is saying yes you can be vulnerable, but you are saying okay I will judge his actions and everything and then I will be vulnerable. But then हम वेट किस चीज की कर रहे हैं कि कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा आपको? ये आइस ब्रेक कैसे होगी, ये क्वेश्चन है मेरा. Maybe you can answer better. I don't know. Okay, no problem. Can I try? Other people, yes, Prerna, you're next. Rupali. Okay, Rupali, go ahead. Okay, okay. So basically, I was thinking maybe we can start with some small things, and we can try to be vulnerable about some small things, and then gauge that how good it is going. एग्जैक्टली. अगर हमें कुछ टेस्ट करना है तो हमको ही तो टेस्ट इनिशिएट करना पड़ेगा ना. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि देन व्हाई एम आई नॉट एबल. ये जो आप बात बोल रहे हो ये तो सही बात है एंड इट मेक्स ऑल द सेंस. बट देन ये सब जानने के बाद भी हम वो कर क्यों नहीं पाते? फिर हम वेट किस चीज की करते? तो आई वांट that the other person, I want कि other person should trust me or I can be vulnerable. और मुझे ये भी पता है कि टेस्ट करने के लिए तो मुझे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बट मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूँ. Yes. Deepti, you want to say something? No, sorry. Okay. Dipender, your hand is up. You want to say something? Yes, yes. My question is very simple. इतनी फास्ट जिंदगी है आज. Why are we? एक मिनट, अभी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उससे रिलेटेड ही है या कोई नया क्वेश्चन पूछ रहे? इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ. Why are we taking so many EMI steps? If you want to have something, from the other person, some expectation, why just go straight forward? Tell the person that there are some feelings, there are some emotions, and just get an acknowledgement. हद से क्या होगा, मना ही हो जाएगा. इससे क्या होने वाला है? छोटी छोटी चीजों को क्यों यही तो पहले क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हम कर पा रहे होंगे. सो व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग दैट? व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम टेकिंग दैट इनिशियल स्टेप? कुछ लोगों को लगता है दोस्ती भी टूट जाएगी. कुछ लोगों को लगता है दोस्ती भी टूट जाएगी इस चक्कर में, या जो रिलेशन चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच स्टॉपिंग पीपल. ठीक है. सीमा, योर हैंड इज अप. चलो औरों से पूछते हैं. सीमा, योर हैंड इज अप. यू वांट टू से? So, Akarma, according to me, there can be two factors. One is the fear in us because of maybe the past experiences and not able to be sure of that I Past should. Experiences with this person or some other person? Some other person. Means if on past experiences only, the baggage is there. So Correct. I am in a correct relationship, but I'm not sure that I can be like vulnerable in front of this person because it's all coming from my fear of the past. And other aspect could be that I am not able to trust myself enough in the sense that I am not able to make a choice at my level, and that is why I'm not able to, step forward and take any kind of decision or something. Good answer. Yes, it's our own baggage जो हम कैरी कर रहे हैं. तो हम चाह तो ये रहे हैं कि हमें ये सब मिले, लेकिन हम इनिशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम खुद ही एक बैगेज कैरी कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और उसको लेके उसको ढो के हम चल रहे हैं. एंड दैट पास्ट एक्सपीरियंस कुड बी फ्रॉम पीपल हु हैव
broken our trust or whatever. But then how healthy is this? अब ये तो ऐसा एग्जांपल हो गया ना कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें वहां पे खाना पसंद नहीं आया तो हम रेस्टोरेंट जाना ही छोड़ दें. Rupali, you want to say Yeah, something? that was a really great example of the restaurant thing. And then I was sharing that in my case, I remember I do not get vulnerable because I get attached very quickly. And then I have a fear कि आगे जाके if it doesn't work out, what will happen, and I might get abandoned and all that. So that is another reason that I think that it is not difficult to get vulnerable. Exactly. So now you are seeing, your question was कि रेड फ्लैग कैसे बन जाते हैं. हम ही बना देते हैं ना उनको रेड फ्लैग अपनी थिंकिंग में. Mhm. तो हम चाह तो एक तरफ ये रहे हैं कि ऐसा हो जाए, और एंड मे बी द अदर पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट हमने चांस ही कहाँ दिया उसको. तो हमने ही तो बना दिया ना उसको रेड फ्लैग अपनी तरफ से. तो उसमें तो हम ही अपना एक रास्ता है जो ऑलरेडी क्लियर है, हम उसी में पहले पत्थर डाल दे रहे हैं और फिर हम चल नहीं रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुत पत्थर पड़े इसमें. Does that answer your question, Rupali, when we were asking about the green flag and the red flag, how we convert things in हम ही कैसे इस चीज को कॉन्वोल्यूट कर रहे हैं because of the fear, the insecurity, the baggage and everything that we are carrying. So उसको drop करने की बजाय उसको हम carry कर रहे हैं, उसको हम संभाल के रख रहे हैं, and then we are projecting it out on the other person कि नहीं ये भी वैसा ही होगा. So is there any wonder कि then we are not able to create harmonious and good relationships regardless of red flags or green flags? True, correct. तो चांस तो देना ही पड़ता है ना. बिना चांस दिए तो नहीं होता. और चांस हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान लाने की जरूरत है पहले. क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इनिशिएट तो हमें ही करना पड़ेगा, टेस्ट तो हमें ही करना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू बी वल्नरेबल विद द अदर पर्सन एंड आई एम वेटिंग कि मेरे को उसके एक्शंस और उसकी बातों को और एक्शंस को जज करना है कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सब सब बहुत बढ़िया चीज है, सब बहुत बढ़िया, लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं. हम टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं. क्यों टेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आई हैव बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट, आई हैव माई ओन इनसिक्योरिटीज, आई हैव माई ओन फियर. तो मैं ही अपने आप को रोक के रख रहा हूँ. और मैं ये एक तरफ ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को दूसरे में दिखे, मुझे ट्रस्ट आए ताकि मैं उसमें आगे बढ़ूं. लेकिन वो ट्रस्ट देखने के लिए मैं टेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ. तो कैसे होगा कुछ? यस. See, yeah, the word I would prefer not the word test, but it is an initiative because ताली दोनों हाथों से बजती है. You know, whether it's matrimony, whether it's buying a new house, whether finding a property or a relationship, you have to take that first step. अगले 20 साल मुझे इस फ्लैट में रहना नहीं रहना. अगले I can see myself with the other person for the next 10 years. घर बैठे तो कुछ नहीं होता. This is what I firmly believe, and it also depends on the personality. I'm a highly expressive person. मेरे लिए ठीक है. If something is not working, I'll be straightforward to ask a person that, look, I like you, and do you think we can walk together in the future? If it doesn't work, I end the chapter there itself. But I would not be, flickering in my mind कि वो सोचेगी अब मैं उसे कॉल करूंगा उसका मैसेज आएगा. इतना टाइम मैं नहीं इन्वेस्ट करता. It's very clear. This is what I firmly believe. और अगर अपने ऊपर भरोसा है तो चीजें ऑटोमेटिकली देर सवेर सही हो ही जाती हैं. So more of a personal choice, and rather than dreaming or waiting or living in a eyes of world of Alice in Wonderland kind of stuff. Be open. Somebody could be shy, somebody could be introvert, but take that first step. मेरा ये मानना है. Anything, any initiative in life. Thanks, Jitendra.
Yes, Anamika, over to you. Yes, yes, yes. That was a very wonderful question, Rupali. And yes, so this is what keeps happening in our relationships when it comes to green flags and red flags. So basically, the whole point is that these flags are there right in front of us, right? But we are wearing our own filters, we have our own projections. So whatever we are bringing from the past, like Seema was sharing, past incidents, past baggages, whatever we have accumulated in our lives, whatever kind of hurt, pain, trauma, wounds that we have gone through, we ourselves keep living in the same, insecurities, same fears, and we keep projecting and seeing things the way we want to see them, right? So green flags could turn out as red flags, red flags turn out as green flags for, and that's how we keep ending into the same kind of relationships again and again in, with different people, but it's the same thing happening. And we keep seeing things only the way we want to see those things, not seeing things the way they are, actually seeing whatever good we can find as good, whatever is not so good, we see it not so good. So we lose that, capacity of discernment to see things the way they are. And that's where, this whole raita happens in our lives, and we keep messing things up in our own head, right? So the whole point of being able to identify red flags and green flags is to develop that capacity of discernment to see things the way they are. So we were talking about, this whole thing, and I just remembered, a client that we had, and she had tried so many relationships, and she was still dating so many people, and everything, and yet she would come up and say that this does not work out, that does not work out, it's the same kind of people, I'm getting again and again. The problems differ sometimes, but the end result comes out as the same. And overall, her calls were focused in this area, bringing her in between so that she would stop seeing the red flags as green flags and green flags as red flags. And by the end of the call, that is what, she gave her feedback that, now I go on a date and it's so easy for me when I'm just looking at that person and that person is talking, and it's like, I'm so easy. I pick it in 10 seconds that, oh, this is a red flag. Oh, this is a green flag. Right. And she became really good in doing this, because when she let go of, her own belief system that she had, so that she could, see things from a more broader perspective, expanded perspective, things start becoming clear to us, that where, we ourselves go and get stuck in the hole again and again, right? So wo nahi hona hai. And that's the whole point of bringing this awareness, right? Cool, cool. What else? Anybody else wants to share anything? Any green flags that you observe, or any experience, or anything, any story that you have? Yes, Dipinder, go ahead. Yes, so this is not related to relationship as such. I'm talking about the love part, but there was a picture of a very senior person. See, I work as an assistant vice president with Axis Bank, almost 2.5 years now. There was a lady, and the assumption of that lady, senior lady, the assumption of that lady was बहुत ही attitude वाली है, आसानी से कोई approvals नहीं देगी, and she has an air of her own, not approachable at all, and smile to kabhi karegi. That was a atmosphere created around it. So talking about green flag, and people were not very keen on even talking to her, irrespective of how much she's earning and what senior level she is. So she was, tagged as a non-approachable one. I got to cross paths with her because of some project I was working.
And I had the same, assumption कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं तो कुछ सच ही होगा. But I realized after 15 days of interacting, चाहे वो work related ही था, right? कहीं मुझे समझ में आया कि no, this is not true. This is absolutely not true about that lady. The lady turned out to be an absolutely gentle person. Uh, yes, because of her work profile. And I got the green flags because I was assuming मैंने mail कर दिया, ये approval नहीं आने वाला अगले 10 दिन. But it came in next 24 hours automatically, and I was like, अरे ये कैसे हो गया? The second green signal came when I did a Teams meeting with her. And it turns out that the person is exactly the opposite people are perceiving, her about. So at times ना हमारा खुद का एक प्री ऑक्यूपाइड नोशन बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वी इंटरेक्ट, जैसे आप लोगों ने बैगेज बोला, और वो प्री कंसीव नोशन चलता रहता है लाइफ में, चाहे आप फिल्म स्टार्स को ले लो, किसी को भी ले लो. सो अगेन देयर ओनली टू थिंग्स व्हिच आई लाइक टू कंक्लूड इज, वन इज आपकी खुद की अंतर आत्मा होती है ना, योर ओन इनर वॉइस, वो कभी गलत नहीं बोलेगी. So if you're getting a voice or a vibration that, look, this person seems genuine, irrespective of what the world is, saying about it, and you're getting some green flags, please take a step forward. ये मेरे साथ बहुत बार हुआ लाइफ में. For people जिनको मैं बहुत ही gentle अच्छा समझता था, they turned out to be absolutely different. Or people जैसे I would not like to name that lady, right? But she turned out to be absolutely helpful. 24 घंटे में approvals आए. And a pretty nice person जब मैं मुंबई उनसे मिलने गया. So hear the voice of what your heart says. Everybody goes through a lot of stuff. I've been going through a lot of stuff in the last 3 years. Anamika knows about it. So that's what I say. And ये हिचक, ये hesitation, I think जैसे मैंने पहले भी बोला, इतना नहीं सोचने का जिंदगी में कि सामने वाला क्या बोलेगा, मेरे बारे में क्या होगा. I have to impress anybody. चलो मैं पूछूंगा तो शायद बात बिगड़ जाएगी, टॉकिंग टर्म्स नहीं रहेंगे. I think these are all barriers which will ever stop you. You never know, a green flag would be waiting for you. And just because you're not taking a step, you're missing that green flag. और फिर green flag को miss करोगे तो red flag automatically हो ही जाएगा. This is my personal belief. I'm an initiative taker. And of course, I take that first step. So that's an experience I hold. Beautifully said, Dipinder. Thank you. Thank you so much. Yes, yes. So this word that you use, that preconceived notions that we have, we go, yeah, certainly with tons of preconceived notions of our own. And, our parents, the way we are raised, the environment in which we are raised, friends, school, everything. The filter that we talk about, that we keep wearing all the time, it's made up of so many things, right? So many things of people saying and telling us how we should see life. So removing that filter is very important. And yes, if we keep ignoring the green flags, that automatically sends us on the way of red flags. Yeah. Cool. Anybody else? I think that we should talk more on the baggage part and all the other things. So I think we've talked to this. So the conversation has moved in that direction. So perhaps talk a bit more about that, because obviously what we should do or what we can do is very good. However, the question still remains why we don't. तो ये समझ में आने के बाद भी हम कर क्यों नहीं पाते हैं? That is the bigger question to analyze as well. What is stopping us? So most of all of you are adults over here, and you kind of understand this. ये तो है, बिना करे बिना फर्स्ट स्टेप लिए तो नहीं होने वाला है, लेकिन हम ये सब जानने बूझने के बाद भी हम क्यों नहीं कर पाते? What is stopping us?
Is it because you never knew this, which I highly doubt? Did you never knew कि you had to take the first step? Um, or if you knew that you have to take the first step, then why don't you? What stops you? Let's talk about those baggages, those fears, those insecurities you're talking about. So, in what way they are hampering? In what way they are impacting? How they are impacting your quality of life? How they are impacting your decision? How they are impacting your relationships? Yes, Deepan. See, there's something called an added multiplying effect or an addition effect. और ये हम सबकी लाइफ में होता है. I'll give you a very small example. Groceries का example देता हूँ मैं आपको. हम किसी फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं. बारिश जैसे आज गुड़गांव में हो गई है. We are trying to find a good vegetable for a family कि चलो कुछ खा लेंगे ढंग का. नहीं मिला. और it could be even a pen or it could be a bag or anything that you can think of. एक जगह गए नहीं मिला, दूसरी जगह गए नहीं मिला, रात हो रही है, तीसरी जगह जा रहे नहीं मिल रहा. फोर्थ टाइम ना हमें जो भी मिलेगा हम उसमें सेटल कर लेंगे. दैट इज फॉर श्योर. इट्स अ ह्यूमन नेचर कि चल यार अब ये मिल रहा है इसी से गुजारा कर ले. एंड दैट यूजुअली हैपेंस विद रिलेशनशिप्स आल्सो. एज निकल रही है, मैरिज करनी है, डेट समबडी, लव अरेंज व्हाटएवर इट इज. चलो अब इतनी उम्र की, चलो अब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. इट आल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्ट कि अभी तक नहीं मिला आगे भी नहीं मिलेगा. बहुत रेयर लोगों में पॉजिटिविटी इतनी होती है. I told as earlier as I know Namika also 3 साल से कुछ ना कुछ मेरी फैमिली में कोविड वोविड चल रहा है. Recently in the month of April, I went to Axis Bank, one of the loan centers, just to get a staff loan to buy a new car. मेरी वेगन और 15 साल पुरानी हो गई. And I got diagnosed COVID because the center where I went, 2-3 people were already having those viral symptoms and COVID symptoms. So मुझे COVID हो गया. I'll be very honest with you, right? And I was taken aback within 24 hours. 103 का बुखार और मुझे एडमिट होना पड़ा आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में. एंड हॉस्पिटल से में भी मैं कह रहा हूँ यार मेरा स्टमक बहुत दुख रहा है. कोई मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं, कोई अस्थमा नहीं, कुछ नहीं, कोई बीपी शुगर कुछ नहीं. मुझे मैं उनको कह रहा हूँ लुक आई एम फेसिंग प्रॉब्लम. एंड लाइक सर ठीक है कोविड में ठीक हो जाओगे. डिस्चार्ज होने के बाद भी स्टमक दुख रहा है. देन आई फाइनली वेंट. मैं ऐसे नहीं चलेगी लाइफ. I got myself diagnosed जो भी endoscopy, colonoscopy and all that. पता लगा छोटा सा stomach infection था. And there was a small inflammation. The only approach during this period of time I was telling doctors that, look, doctors, I have a fitness channel. I'm a bodybuilder. I have seen a life of 53 kgs. I've seen a life of 86 kgs of my weight. I've seen a life of muscular 74 kgs of my weight. Now, जब हम इस अप्रोच में नहीं जाते, आगे आगे नहीं बढ़ते, किसी भी चीज में लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, बैगेज, बैड एक्सपीरियंस, अरे यार अब तो इतना हो गया अब नहीं कर पाऊंगा. आई टोल्ड माई डॉक्टर वेरी क्लियरली, मैं कहा डॉक ये जो भी इन्फेक्शन वगैरह है ना कोविड से जो मेरा पेट खराब हुआ है तो आप इसे ठीक करो, मुझे दोबारा वेट से उठाने हैं. Most of the people, 99.99% people would have that addictive or a multiplier negative effect. यार अब तो कभी करते थे फुटबॉल खेलते थे 20s में, अब तो 35 हो गए, अब कहाँ से फुटबॉल खेलेंगे, टेबल टेनिस खेलेंगे, अभी तक नहीं मिला आगे नहीं मिलेगा. No, things are getting day by day adverse for me. They lose out that positivity. और कोई सामने जेन्युइन अच्छा इंसान भी होगा ना जिनसे ग्रीन फ्लैग मिल सकता है आपको. Your negativity will overpower you. I'm lifting weights for the past 3 weeks, still under small medication of stomach, but I'm getting into the same one because I don't want any of my age or experience to shadow my positivity and turn it into negativity. I've I've been dating a couple of people. I've met a girl, a week ago. I could not find her suitable for me, or maybe I was not adaptable for her enough. I broke up. I said, ठीक है भाई नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा. But that would not stop me for approaching anybody else in life just because things did not work in the past. So I think people should come out from their past negativity which is surrounding them like a cloud
If at the age of, I'll be turning 41 this 8th of August, महीना हुआ है मुझे कोविड से हटे हुए, डिस्चार्ज हुए, आई एम लिफ्टिंग वेट्स. I think you should never let that spark of your positivity die out because of your past experience. कभी वो इनिशिएटिव मत छोड़ना, चाहे वो 60 की एज हो, 40 की एज हो, बिकॉज आई फर्मली बिलीव इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है. Whether it's boys, girls, married life, happiness, all you have to do is take that first step. And when you take that first step ना, तो उस स्टेप में इतनी जेन्युइनिटी होनी चाहिए कि यार आगे बढ़ते हैं, अच्छा ही मिलेगा मुझे कुछ. ये नहीं सिम्टम्स है अभी तक तो नहीं मिला, अब क्या मिलेगा. If the second sentence is prevalent or dominating, I can promise you, अच्छा काम भी करने जा रहे होगे ना, ग्रीन सिग्नल भी ढूंढने जा रहे होगे, अपनी वजह से उसको रेड में कन्वर्ट कर दोगे. दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव. और इसी वजह से लोग रुक जाते हैं कि यार अभी तक नहीं मिला, अब क्या मिलेगा टाइप्स. दैट्स माय व्यू ऑन इट. Great. Thanks, Dipender. Well, nice sharing. Very appropriate and to the point. Very nicely put as well. Thank you. Who's next? Rupali, you're next. Your hand is up. You want to say something, Rupali? I think Defender covered it. That's what I wanted to share. That after multiple datings, after dating one guy after another, then there comes a time where you just give up on the process. Like it's not that some I will compromise, but it's just that giving up on the process and just say, okay, leave it. It's not happening, so just leave it. And then you are like going with the flow, kind of like not doing anything. So that can happen because there is no right direction. You do not know when it's gonna happen, how it will happen, because all this while it never happens. So that's what I think. Thanks, Rupali. Thanks for sharing that. Seema, you're next. Yeah, so just getting the focus back to uh, the discussion that although what the Pender and Rupali shared is very apt to, just that the baggage thing. So if I was seeing like with my past experiences, I could just share with everybody is just that the fear in me was stopping me. But when I started looking at my baggage and wanted to be sure in the relationship that what Dipender is saying comes with a strong mind. And definitely, to me, it will be more of healing my attachment style because it's not only getting reflected in my relationships, but in most of the things in my life. Because after knowing the attachment style, a lot of things I could understand from where it is coming and what is required, what steps I need to fix them. So I think knowing my attachment style has helped me a lot, and definitely working on my own self is the only way to go ahead. So for me, healing myself and knowing things that what is stopping me, why this baggage is there, uh, ask me for a question, and that is why I'm not doing anything about this baggage and continuing to live a life which is like that only and attracting the same kind of patterns. Am I um, like okay to keep wasting my time and energy when I can just actually look into within me and heal my things. So yeah, this is what was coming to me, and this is what I wanted to share. Thank you. Hmm. Thanks, Seema. Yes, I totally agree with your assessment. It all starts by when we talk about the baggage, when we talk about the insecurities, fears. Um, this is the normal person terminology or language that we use. So generally speaking, people talk like that. They're talking about baggage, preconceived notions, and fears, insecurities. ये कॉमन लोगों का ऐसा हम आपसे बात करते हैं ये. पर अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अगर तो the terminology that Seema is using is the terminology from the psychological model that we use from the attachment style theory.
is the terminology of insecure and secure attachment styles. So ये ऐसा है कि जैसे um, earlier you um, you were having symptoms of diabetes, बट जब तक आपको डॉक्टर ने बताया नहीं था कि आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज वाली जो टर्म है वो यूज नहीं कर रहे थे। आप सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने आपको बताया कि ये डायबिटीज जैसा है या डायबिटीज है, तो उस दिन से आप वो सिम्टम्स के बारे में बात करना छोड़ देते हो, अब आप डायबिटीज वर्ड जो है वो यूज करना शुरू कर देते हो, बिकॉज नाउ यू नो कि इसको ये कहा जाता है। So that is the terminology which she is using, is bringing our focus ki what kind of insecure attachment style we are operating from, because they are indirectly or directly linked to these feelings or emotions of fear, insecurity, baggage, preconceived notions, and not able to give other people a chance and all those kind of things. Right? तो ये है. Now taking the step further, यहाँ से और आगे बढ़ते कि ये आते कहाँ से हैं? Attachment style itself is not a genetic thing. It's not a disorder or anything. It's a condition, and a condition is created based on how we are, how we go through life, our experiences in childhood, our environment that we have grown up, the people around us, our parents, relatives, joint family में है तो वो सब लोग, teachers, neighbors, all those things that combine, all those experience combined is what creates certain behavioral patterns. हम एक तरीके से रहना, सोचना, react करना सीख जाते हैं. Some people may call it like people pleasing, or anger issues, anxiety, stress. ये सारी चीजें हमें सर्टन बिहेवियरल पैटर्न से बिल्ड होनी शुरू होती हैं, और वो पैटर्न कहाँ से पिक होते हैं? दे गेट पिक फ्रॉम द वे वी आर ब्रॉट अप इन दैट एनवायरनमेंट. तो इन सब चीजों को कंबाइन करके हम बोलते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. दैट इज द टर्म दैट वी यूज. It's important for you all to understand this thing क्योंकि ये worldwide, these terms are used worldwide. So you can Google it, you can search it, you can talk to other people who know about it. So आपको एक लेबल, एक टर्म मिल जाती है जिसको पकड़ के आप और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, और ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो. तो ये हो गया कि अभी पता चल गया, बिहेवियर से पता चल गया, ऊपर का बिहेवियर देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि these are the attachment styles we are operating from, insecure attachment styles. So there's three types of insecure attachment styles. We have already had a discussion of this topic, so वो हमारे channel पे available है, so I won't go in the details of it. You can always refer to that discussion. It's titled Attachment Style itself. So please go through it. It's a detailed discussion on this topic. But today I want to go further from there. जो हमने वहाँ discussion नहीं की, उसमें अब आगे I want to go in this one. कि वो कहाँ से आया? This is learned behavior. This is not genetic. This is not कि my father was, let's say, anxious, preoccupied, attachment style, so I will also be anxious, preoccupied. It's not like that. It's not hereditary. It's not genetic, but it is inherited. ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो हम अपने आसपास के लोगों को देख के हम पिक कर लेते हैं. इट्स लाइक दैट सेइंग ना, मंकी सी मंकी डू. इट्स लाइक दैट. तो हम जैसे जैसे देखते हैं आसपास के लोगों को, या हम खुद ये चीजें पिक कर लेते हैं. तो ये सब चीजें जब हमारे अंदर बिल्ड होती हैं, तो दे स्टार्ट क्रिएटिंग सर्टेन स्प्लिट्स इनसाइड अस. सो we talk about those ones also. उसकी भी अलग से एक conversation है. I've written a blog post on it as well, so you can check that one. तो हम जब ये बात करें, बैगेज को ड्रॉप करना है, इनसिक्योरिटीज को हील करना है, इससे बाहर निकलना है, तो एक्चुअली में हम क्या बात कर रहे हैं? मैं इस पे आ रहा हूँ ताकि यू कैन हैव अ मोर टेंजिबल approach towards it. You can have something more meaningful which you can act on.
So all these behavioral patterns, these insecure attachment styles, start to create certain splits inside us. और वो स्प्लिट इस तरह से हैं कि जैसे आपके अंदर ना बहुत सारे बच्चे हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसको अच्छी तरह समझने के लिए. दिस इज एन एग्जांपल दैट वी गिव इन अनस्टक योरसेल्फ वर्कशॉप ऑल द टाइम, आज भी हुई सुबह. तो वही एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ. तो let's say कि there is a little girl who's a free flowing bird. छोटी बच्ची है 5-6 साल की. सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हंस रही है, खेल रही है, खा रही है, सो रही है, जो उसको करना है वो कर रही है, मजे में लाइफ चल रही है. फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते, around 7 years of age, a general consensus is that from 7 years of age we start to develop what we call the identity or the ego. So यहाँ से बिल्ड होनी शुरू होती है. तो अब लेट्स से 7-year-old गर्ल गोज टू हर डैड, आस्क हिम समथिंग. अब डैड जो है ही इज सिटिंग इन अ बैड मूड. कुछ हो गया, मान लो काम पे किसी से झगड़ा हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, 50 रीजन है, कोई भी पकड़ लो. तो किसी रीजन से वो ऐसा फूके हुए बैठे. तो वो बच्ची ने आके कुछ बोला और डैड ने उसको झाड़ दिया कि अभी मेरा मूड खराब है, अभी डोंट परेशान मत करो मुझे, जाओ यहाँ से. तो अब पहले तो ये बच्ची आराम से मांग लेती थी जो उसको मांगना है, कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत होती थी. तो इसने रियलाइज किया, 1-2 बार ऐसे किया. तो जब डैड ने झाड़ दिया तो मदर ने नोटिस किया. मदर ने उसको बोला कि सी डोंट बॉदर योर डैड लाइक दिस. तुम देखो वो परेशान है, उनको ऐसे मत करो. तो मदर इज ऑल्सो नॉट, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बोल रही है. शी ऑल्सो वांट्स टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड एंड ऑल्सो वांट टू कीप द हार्मनी इन द हाउस एंड ऑल दैट. सो कि वो जब तुम्हारे डैड जब ऐसे मूड में हो तो उनको परेशान मत किया करो, देखो जब वो अच्छे मूड में हो तब बात करो. तो अब बच्चे ने सीखा क्या यहाँ से, एकदम अचानक से जो फ्री फ्लोइंग बच्चा था जिसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, तो जब जो चीज पूछनी थी वो पूछ लेता था. तो बच्चे ने यहाँ से क्या सीखा कि नाउ आई कांट, एक ब्रेक लग गई उस फ्लो पे. सो आई हैव टू ऑब्जर्व, आई हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन, आई हैव टू मेक श्योर कि दे आर इन अ गुड मूड. तो यहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट हुआ. व्हाट इज दैट ट्रिगर पॉइंट? द ट्रिगर पॉइंट इज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन. कि जब भी किसी को ऐसा देखो कि वो परेशान स्टेट में है या इस स्टेट में है तो थोड़ा उनसे दूर रहो, बात मत करो. और जब वो खुश वाली स्टेट में होंगे तब अपनी बात रखो. तो बच्चे ने ट्राई किया और जब फादर वाज इन अ गुड मूड शी आस्क्ड एंड द फादर गेव हर व्हाटएवर शी आस्क्ड. तो यहाँ से बच्चे ने क्या सीख लिया कि ये करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो मैनिपुलेशन जो है वो सीखना शुरू हो गए हम, कि ऐसे ये जज करना होता है. हम कभी भी कुछ भी नहीं मांग सकते कैसे भी, हमें ना दूसरों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है. तो वो फ्री फ्लो में एक ब्रेक लग गया. तो यहाँ से हम बोलते हैं कि यहाँ से 2 स्प्लिट्स क्रिएट हो गए उस बच्चे में. एक तो जो ओरिजिनल उस बच्चे की पर्सनालिटी थी व्हिच वाज फ्री फ्लोइंग एंड एवरीथिंग, अब सिचुएशन टू सिचुएशन वो बच्ची जो है उसको ऑब्जर्व भी करना है कि दूसरे का मूड ठीक है या नहीं. अब ये जो चीज है ये सिर्फ फादर तक लिंक नहीं रहेगी. फादर के इंसिडेंट से तो उसने ये सीखा, अब कल को वो अपने दादा को देखेगी या इवन मदर को देखेगी या टीचर को देखेगी मूड ऐसा खराब है, तो शी विल सी कि अच्छा अभी मेरे को आई हैव टू होल्ड ऑन टू दिस, तो अभी मेरे को नहीं करना है. अब आगे चल के लेट्स से कि शी ऑल्सो लर्न्स कि वेट क्यों करना है, मैं कुछ करके अपने फादर का मूड ठीक करने की कोशिश करती हूँ. उनको कुछ बहला फुसला के कुछ कुछ किया अपने फादर के साथ, उनका मूड अच्छा हो गया. मूड अच्छा होने के बाद उसने जो उसको चाहिए था उसने वो मांगा और फादर ने उसको वो दे दिया. अब क्या हुआ, बच्चे के हाथ तो गोल्ड माइन लग गया एकदम से कि ये तो बढ़िया हो गया, अब तो मेरे को वेट भी नहीं करना किसी के मूड के ठीक होने का, अभी तो मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ. अब बच्चा 7 साल का बच्चा ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स नहीं यूज करता है कि दे आर मैनिपुलेटिंग एंड ऑल दैट. ये तो मैं यूज कर रहा हूँ अभी के लिए. तो बच्चा तो जो कर रहा है वो तो जस्ट उसके आगे जो सिचुएशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है. लेकिन ये करके वो सीख क्या रहा है कि इससे काम बन रहा है. नाउ एक और स्प्लिट क्रिएट हो गया
कि किसी को देखो, अगर वो खराब मूड में है, ये ट्रिगर पॉइंट हुआ, जैसे ही किसी को खराब मूड में देखा, अब हम देखते कि अच्छा कुछ दिमाग में स्कीम चलने लगेगी कि इसका मूड कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे अच्छे मूड में लाया जाए। क्यों? क्योंकि मुझे अपना कुछ काम निकलवाना है। ठीक है, तो यहाँ से पीपल प्लीजिंग का जो एटीट्यूड है वो शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ फादर तक तो नहीं रुकेगा, ये और भी केसेस में बढ़ेगा। तो ऐसे बड़े होते होते हम वो तो भूल जाते हैं कि हमने ये कहाँ सीखा था, पर ये लेसन सबकॉन्शियस, ये रूटीन्स, ये पैटर्न्स, ये प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस में फिट हो जाती है। अब वो बच्चा 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद भी शी डजंट रिमेम्बर कि ये मेरे फादर का इंसिडेंट था, मैंने वहां से ये सीखा था। All of a sudden she's 30, 35 and 40 and then she's figuring out, yeah, I don't know why I am people pleasing so much, I'm not liking it, but मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि why I can't stop it and all that। तो वो पैटर्न इतना इनग्रेन हो जाता है, इतने साल वो प्रोग्राम को रन करते 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 कि हम उसको एक्सपायरी डेट डालनी भूल जाते। बच्चा बड़ा हो गया लेकिन वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो आपके अंदर जो ये बच्चा है जिसने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था, जिसने ये स्प्लिट क्रिएट किया, वो कभी बड़ा नहीं होता। वो अभी भी वही 7 और 8 साल की बच्ची ही है। बाय एज यू वुड बी नाउ 30, 35 व्हाटएवर, बट दैट चाइल्ड इनसाइड यू स्टिल दैट 7, 8 ईयर ओल्ड। तो जब भी आप होगे तो 35 के देखने में, लेकिन जैसे ही आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आएगी, दैट चाइल्ड विल कम आउट। दैट चाइल्ड से वेट, आई विल हैंडल इट, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बार किया है, तो ये आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। तो द चाइल्ड विल कम आउट, द चाइल्ड विल प्ले, चाइल्ड विल रन योर लाइफ। और वो सब होने के बाद में आपको रिमोर्स, रिग्रेट, सब कुछ फील होता है, गिल्ट फील होता है कि अरे आई शुड नॉट हैव डन दिस, आई शुड नॉट हैव सेड दिस, आई शुड नॉट हैव रिएक्टेड दिस वे एंड ऑल दैट। वो रिमोर्स और रिग्रेट किसको फील हो रहा है? दैट इज फेल्ट बाय द एडल्ट यू। सो अपने आप को ऐसे दो में देखो कि आप एक एडल्ट भी हो और एक बच्चा भी हो, तो आपके अंदर दो लोग रह रहे हैं, एक एडल्ट और एक बच्चा। तो रिमोर्स और रिग्रेट फील होता है उस एडल्ट को, क्योंकि उस एडल्ट ने तो बहुत लर्निंग कर लिया, उसने तो बहुत ज्ञान बटोर लिया है कि ये ऐसा होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर बेस, हमको ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए, है वो है। लेकिन आपकी लाइफ की कार तो वो बच्चा ही ड्राइव कर रहा है, आप तो बैक सीट पे बैठे हो, आप तो बैक सीट पे बैठ के ये सारा ज्ञान बटोर रहे हो, सारी लर्निंग कर रहे हो, आपको ड्राइविंग का मौका ही कहाँ दे रहा है वो बच्चा। तो जैसी कोई सिचुएशन होती है, दैट चाइल्ड कम्स आउट एंड स्टार्ट्स प्लेइंग। So this is when we observe these behaviors on top, we get a feel ये कौन सा इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है ये ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके जब हम अंदर जाते हैं, उसमें और नीचे जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हैं, देन वी सी कि ये कौन से बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, जो आपको आपकी लाइफ रन ही नहीं करने दे रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ with father that happened and 1 or 2 splits got created. You can multiply this. लाइफ में कितने इंसिडेंट्स हुए होंगे, फादर के साथ ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए होंगे, मदर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, आगे चल के रिलेशनशिप्स में एंड ऑल दैट। सो जब तक हम बड़े होते हैं हमें खुद ही नहीं समझ में आता हमारे अंदर कितने बच्चे इस समय खेल रहे होंगे, कितने सारे स्प्लिट्स हम कैरी कर रहे हैं। इट इज वेरी ऑब्वियस व्हेन यू सी कि दो एडल्ट, अब मान लो कि एक मैं ऐसे ही नंबर लेके चल रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली द नंबर, बट एक नंबर लेके चल रहा हूँ कि लेट्स से कि 25-30 साल की एज तक आते आते आपके अंदर 25-30 स्प्लिट्स क्रिएट हो गए। दैट्स जस्ट अ नंबर, इट्स नॉट नथिंग साइंटिफिक अबाउट दिस, जस्ट आर्ग्यूमेंट सेक के लिए बात कर रहा हूँ। तो 25-30 स्प्लिट क्रिएट हो गए। अब नाउ यू मीट समबडी, यू मीट अ पोटेंशियल पार्टनर, now that person will also be bringing same thing। मान लो उसके अंदर भी 25 स्प्लिट है। अब यहाँ पे जब दो लोग आते हैं, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि दो एडल्ट झगड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का कौन सा बच्चा ट्रिगर हो रहा है, ये 50 में कौन से बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी कौन सी बात से क्या ट्रिगर हो गया, कौन सा बच्चा बाहर आ गया खेलने के लिए, हमारा कौन सा आ गया, उसका कौन सा आ गया। लेकिन देखने में ये लगता है कि दो एडल्ट्स हो, यहाँ पे दो एडल्ट्स तो एकदम साइड में बैठे, उन दो एडल्ट्स को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारे बच्चों ने ही आपकी लाइफ को ओवरटेक कर रखा है।
सो सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद अगर रिएक्शंस वही आ रहे हैं, सब कुछ वही चलता जा रहा है, वैसा ही होता जा रहा है, तो वेरी गुड इंडिकेशन कि अभी भी उन बच्चों की होल्ड बहुत स्ट्रांग है आपके ऊपर. उनको this is what we call in NLP, there's a technique called splits or parts integration or inner child reparenting. तो वो है ट्रीटमेंट का मेथड, या मतलब मैं ही नहीं बोलूंगा वो ही है. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट वी डू. सो दिस इज व्हाट आई डू, वी डू, एंड दिस इज व्हाट वर्क. तो वो एक तरीका है जिसके थ्रू इन बच्चों से धीरे धीरे हम वो टेक ओवर करते हैं वो चीजें लेना. कई बार होता है, ऐसा होता है कि हम जो ये वर्कशॉप्स करते हैं इसमें सब लोगों को एक ही वर्कशॉप में एकदम से पूरा इफेक्ट नहीं मिलता है. दैट इज फाइन. दिस हैपेंस इन एनीथिंग लाइक यू, कोई भी कोई जनरल कोई भी वैसा भी ले लो, डायबिटीज ही ले लो. अगर किसी को डायबिटीज है, कोई डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट प्लान देता है, अगर उसके बाद 100 पेशेंट्स आते और वो सबको 100 को सेम ट्रीटमेंट भी देता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई सेम वे में रिस्पॉन्ड करेगा और सेम स्पीड से क्योर होगा. तो वो नहीं होता. कई बार कुछ अलग रहता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो कस्टमाइज करना पड़ता है, क्योंकि देर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट आर देयर एज वेल. बट ट्रीटमेंट इज दिस वर्क. बट होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार करना पड़ता है और कुछ और देखना पड़ता है. ऑल दैट, however, this is something which I want to bring your attention to, कि अगर वो बैगेज ड्रॉप करना है, वो फियर्स इनसिक्योरिटीज ड्रॉप करनी है, तो उसका फर्स्ट स्टेप है टू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू व्हाट काइंड ऑफ इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम, and then going further down to see how those insecure attachment styles were created, what led to it, how that learned behavior was adopted, and then what kind of splits that got created inside you that are now coming out as insecure attachment style. So जब हम जाके वो स्प्लिट्स को इंटीग्रेट करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है वो अपने आप जाने लगता है. You start moving towards secure attachment style. So that is the treatment plan. That is the approach, which sometimes works very quickly for some people, sometimes could take a little bit longer for other people, sometimes it could take few iterations for few people, sometimes. So approach यही है कि ये करना है, इसको शिद्दत से करना है, और ये बैगेज और इन सब चीजों को ड्रॉप करना है, ताकि यू कम टू द पॉइंट वेयर यू कैन से कि हाँ, आई नो कि आई हैड बैड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट अब मेरे सामने कोई नया इंसान बैठा है, इसके साथ तो मेरे को वो प्रॉब्लम्स नहीं है ना. मेरे को पुरानी प्रॉब्लम्स है, पुराना बैगेज है, ये है, तो मैं दूसरों का बिल इसके ऊपर क्यों फाड़ रहा हूँ? किसी और ने खर्चा करवाया था, बिल मैं इसके नाम पे फाड़ रहा हूँ अभी, तो वो करेक्ट नहीं. पर अगर वो हम अपने आप को फाइंड इन दैट स्पेस दैट वी कंटिन्यू टू डू दैट, एंड वी डोंट नो कि सब कुछ जानने समझने के बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट हम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस कि ये आपका डिसीजन है ही नहीं. द एडल्ट इन यू नोज ऑल दीज थिंग्स, but the kids inside you, the splits inside you are not even letting you play. ये सब आप सिर्फ जान रहे हो, तो actions और decisions का जब टाइम आता है, then the kids are playing inside. So bringing that focus to that कि उनका कुछ करना करे. So I'll stop here. I've been talking a lot. Was I audible clearly? Yes, you were, Akarma. Okay. So I'll stop here if anyone has anything to say on this. Anybody wants to say anything about what Akarma shared? So he shared the entire process of, how the healing happens, how we get divided, how we are operating from, so many masks. It's like
अनियन, इतने सारे हमारे masks होते हैं, धीरे धीरे एक एक layer upon layer we keep removing those masks so that we can come back to our natural makeup. Natural, we inside outside हम दोनों ही बहुत ही consciously align करके we can take our actions, we can be conscious of the way we think, the way we operate in life, the way we feel, right, and move ahead more consciously. Yes, Dipender. See, whatever has been shared is absolutely true, especially the mask part. But the only thing which I wanted to add is 2 points. People are so fearful about the results. अगर मैंने ये बात बोली तो सामने वाला क्या करेगा, अभी तक तो इतने नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, शायद ऐसा हो जाए. सो रिजल्ट ओरिएंटेड नेगेटिविटी बहुत आती है, राइट? इसी वजह से लोग आगे ही नहीं बढ़ते, स्टेप ही नहीं लेते. द सेकंड पार्ट व्हिच आई पर्सनली आल्सो एग्री इज को दीपेंद्र, उसी को ही ये जो आप बात बोल रहे हो, इसी को ही हम एंग्शियस प्रीऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल बोलते हैं. यस बट So जो मैं that is कहना what I was चाहता saying था, कि मैं नॉर्मल आपसे लोगों की लैंग्वेज में हम लोग हाँ, इस तरह से बात करते हैं, बट देन Correct. वी ब्रिंग अवर फोकस टू दिस. हाँ, जो मैं go ahead. कहना चाहता था कि कुछ समय तक, कुछ सालों तक, 10, 15, 20 साल तक तो मे बी यू वुड बी इन हैबिट ऑफ, अच्छा अभी पापा गुस्से में, अभी बात नहीं करना, अरे ये बात बोलूंगा तो सामने वाला लड़का या लड़की पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी. ये मास्क कुछ समय तक रहेंगे, but there would be a point at one point of life that you'll be absolutely courageous. You would not think of results, you would not think of क्या होने वाला है, अभी क्या हो जाएगा बोलूंगा. You would be a straightforward person. ठीक है यार, जब मेरी नियत ठीक है और मैं सामने वाले को सही अप्रोच से सही इंटेंशन से अप्रोच कर रहा हूँ, तो you would not be overthinking much about it कि अच्छा स्टेप लूं नहीं लूं, अभी फोन करूं, अभी मैसेज डालूं. ये स्टेज सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आता है, किसी के पहले आ जाता है, किसी के बाद में आता है. बिकॉज यू कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ अ मास्क फॉर एवर. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि वो मास्क अब आप शेड कब करोगे. ब्रेकअप्स के बाद करोगे, बिजनेस में नुकसान के बाद करोगे, लोगों से चीटेड होकर फील के बाद करोगे, या एक दिन आएगा जब आप अपने लिए जीना शुरू कर दोगे. And then you would not fear anything. Then you would not fear about the green flags, neither you'll fear about the red flags. You'll be your own. So I personally feel that the person should wake up and be your own self. So ye flags. What you're saying is absolutely right, Dipender. But Yes. I'll tell you, all the people who are here on the call, they know this. What you're Yes. saying, they know this. But some or the other point of time, many people are here who have already worked on themselves, who have already reached the point of what you're talking about. Yes. Now they can Yes. set boundaries. Now they can do, make choices. Then now they can stand up for themselves. Now they don't overthink and all that. But many Correct. of us are, we understand that as adult that, this is the place where we want to reach. But Yes. चाह के बिना वो कर नहीं पा रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है. They are still, stuck in that state of fear. So about the whole thing, the process which Akarma was sharing was about this only. Because जैसे कि आप हैं, right? So you're a very different kind of person, and you learned in a different way. But likewise, all of us, we are physiologically different, we are psychologically different, emotionally different. A lot of us are, trust me, so extremely sensitive, and हमारा nervous system, because of the environment we are raised in, वो इतना dysregulated nervous system हमारा हो जाता है ना कि the moment हमें पता है, जैसे जो आप चीजें बोल रहे हैं वो हम सबको पता है, इंक्लूडिंग मी. जैसे मुझे ये चीज पढ़ ली, मैंने तो इतनी बुक्स पढ़ ली, सब कर लिया, बट फिर भी द मोमेंट वो डिसीजन लेने का टाइम आया, और ओ गॉड, मतलब बॉडी में, माइंड में, it's flooded with all the chemicals and all the emotions and everything, कि उस point of time पे ना इंसान अपना बैलेंस लूज कर जाता है. Correct.
And हो सकता है मतलब I consider you lucky enough if you did not go through a phase like this, but Mm-hmm. there are tons of people who are so extremely sensitive, whose nervous Yes. system have been broken down because of the kind of families they have raised into. जैसे मैं आज सुबह या कल शाम को या कर्मा से डिस्कस कर रही थी, मैं लिटरली 5 साल की थी and I remember that mark sheet where I was seeing that as a child. My mother was so ashamed of me. एक LKG का बच्चा है, आप इमेजिन कीजिए, और Correct. उसकी मदर उसको पूरे टाइम बोल रही है कि तुम्हारे कारण से हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएगी. आई मीन जस्ट इमेजिन, एक 5 साल का Oh my बच्चा खड़ा God. हुआ है जिसके मार्क्स कम आ गए, तो उसकी मम्मी को ये डर लग रहा है कि सोसाइटी में उनकी नाक कट जाएगी. तुम इतनी गधे हो, तुम यू विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग इन लाइफ, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. और ये चीज कॉन्स्टेंटली वो बच्चा अपनी जिंदगी के 20 साल तक सुनता रहता है. राइट, आई टर्न 25 and trust me, I'm in my 30s now and I'm still listening to those things. Although now I have reached a point after working on myself जहाँ पे अब bother नहीं करता. But I have been through that journey. और ना हम जानते हैं कि यार ये ना ऐसे नहीं करना है हमें, बट ना हमसे हो नहीं पाता है क्योंकि वो पूरी चीजें. Yes, मैं Akarna. 2 पॉइंट इस चीज पे बोलना चाहता हूँ और टू ब्रिंग सम. सो दीपेंद्र, योर पॉइंट्स आर करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. Correct. सो एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि समटाइम्स वी हैव टू आल्सो प्रोसीड विद द सेंसिटिविटी कि ना लाइफ में हर प्रॉब्लम सिर्फ मोटिवेशन से सॉल्व नहीं होती है. तो क्या होता है कि ऐसा बार बार एक ही मैसेज देने से कई बार लोगों को ना अपने ऊपर ही डाउट आने लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है क्या. अरे बाप रे. तो क्या होता है कि that motivation could actually drive people in the opposite direction also sometimes, because they are actually not getting any action item in this. All they are getting is कि आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आपके साथ ये साथ ना. So उसमें वो अच्छी बात है, that is good. But motivation combined with some action item to direct them, नहीं तो लोग ना confuse हो जाते हैं. लोगों को ये लगता है कि मेरे को ऐसा क्या है जो मैं figure out नहीं कर पा रहा हूँ. So like this can be very so we have to observe the balance between कि कितना motivation देना है और कहाँ पे have to also bring to their attention कि कुछ action items भी, कुछ देखना भी, काम भी करना है. सिर्फ motivation कि वो हो जाएगा, the believe on yourself कि टाइम से वो चीज हो जाएगी and all that, वो नहीं होता है. बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है वैसा. So like as Anamika is telling you कि perhaps you have been quite lucky in that sense, but हम जब हम बात करते हैं लोगों से, we have seen कि people have been struggling. So I'm working in this field for 20 plus years and thousands of people I have talked to. लोग 15-15, 20-20 साल से रगड़ रहे हैं. So they have reached a point जहाँ पे ना उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलती है, वो एक्शन आइटम ही नहीं मिलता है कि करना क्या है. ये तो बहुत सही चीज है कि ये है, ऐसे है, तो वो करना क्या है वो ही नहीं समझ में आता है. So this is where we have to also strike the balance between giving the right kind of message. मोटिवेशन तो आप रखना ही है कि वो तो होना चाहिए कि कीप योर फेथ अप कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू विल गेट दैट. तो ये एक पॉइंट मुझे बोलना था. दूसरा पॉइंट को एक ये भी बोलना था कि there is another insecure attachment, right? It's called dismissive avoidant. So Can you repeat that, please? I'm sorry. Dismissive avoidant. Okay. So dismissive avoidant के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो शुरू में आपको ये लगेगा कि ये इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल क्यों, ये तो बढ़िया ही लग रहा है. तो उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कि व्हाट डिसमिसिव अवॉइडेंट पीपल लुक लाइक एंड हाउ दे बिहेव, तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि इसको इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की कैटेगरी में क्यों डाला गया है. क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज या जो क्वालिटीज डिस्क्राइब की गई हैं ये तो बढ़िया ही है, क्योंकि ये तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में इतनी लग चुकी है कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है, अब आई एम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो गोइंग इन द ऑपोजिट एक्सट्रीम इज आल्सो एन इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सट्रीम से उठ के दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं. पहले बहुत हॉट, बाद में बहुत कोल्ड. सो लाइफ डजंट हैपन इन एक्सट्रीम. Yes, it does not. Very
fearful avoidant और anxious preoccupied लाइफ में इतनी लग गई उससे कि वो परेशान होके they become dismissive avoidant, start dismissing everything, start avoiding everything, and then they feel like कि I'm supreme and everything, अभी जो मैंने बोल दिया वही है, जो मैंने कर दिया वही है, all that. Correct. So it is not functional because these people also are not recognizing that life is about interdependence. So they still do not recognize that part. So this is the reason why dismissive avoidant is also put in the category of insecure attachment style. So ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि हम एक एक्सट्रीम से उठ के दूसरे एक्सट्रीम में चले जाएं और अभी हमें लगे कि हाँ अब बढ़िया है, अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत साल थप्पड़ खा लिया, अब थप्पड़ मारूंगा. तो इट्स लाइक दिस कि ना तो वहां बात बन रही थी और बहुत थप्पड़ मारने के बाद भी रियलाइज हुआ कि यार बात तो यहाँ भी नहीं बन रही है. Oh God. तो देन the secure attachment style comes in between. So अगर आप जैसे सीसॉ देखो ना, एक सीसॉ, तो इमेजिन अ सीसॉ, उस पे दो एक्सट्रीम, दो सीट्स हैं और जो बैलेंस है वो बीच में है. ठीक है. जब हम इसको देखते हैं, विजुअली देखते हैं, और अगर मैं इसको सीक्वेंस करूं तो चाहे लेफ्ट से या राइट से जो बैलेंस होगा उसका नंबर आएगा 2. करेक्ट. अगर मैं एक को लेफ्ट साइड को 1 बोलता हूं तो ये 2 आएगा, अगर मैं राइट साइड को 1 बोलता हूं तो ये 2 आएगा. किसी भी डायरेक्शन से मैं नंबरिंग करूं लिनियरली, दिस विल कम एज 2. ये हमें ऐसा दिख रहा है और कहीं ना हम ये मान लेते हैं कि जब मैं एक एक्सट्रीम में रहता हूं और मैं उठ के दूसरे एक्सट्रीम में, सो लाइफ में जो बैलेंस आता है वो बैलेंस नंबर 2 पे नहीं, वो बैलेंस नंबर 3 पे आता है. तो होता क्या है कि practically speaking, if you observe this, people will spend life in one side of the seesaw first. जब वहां लाइफ बंद हो जाती है, चलनी बंद हो जाती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि आई एम वेरी एंशियस प्रीऑक्युपाइड एंड मुझे हर चीज से टेंशन हो रही है, हर चीज से ये हो रहा है, ना तो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, पीपल आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट एबल टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड ऑल दैट. एक दिन परेशान होके वो बॉटल जब फट जाती है तो फिर मुझे लगता है अभी भाड़ में जाए सब लोग, अभी मैं दूसरे एंगल पे. तो मुझे लगता है ये बैलेंस हो गया, क्योंकि मैं पहले ये कर नहीं रहा था ना, तो अब ये मैं कर रहा हूँ ना, तो ये बैलेंस हो गया. वो बैलेंस नहीं है, मैं लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड में चला गया. ओके. सो बैलेंस आता है जब मैंने दोनों एक्सट्रीम्स एक्सपीरियंस कर ली होती हैं, और दोनों एक्सट्रीम्स एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कंक्लूड करता हूँ कि ना तो लाइफ यहाँ पे करेक्ट थी और ना तो लाइफ यहाँ पे करेक्ट है. तब मैं उठ के बीच में आता हूँ. तो इसीलिए लाइफ में प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो बैलेंस है उसका नंबर 3 आता है. बट अगर हम वैसे देखते हैं तो उसको नंबर 2, और हम सोचते भी हैं कि मैंने एक एक्सट्रीम में बहुत कुछ कर लिया ना, अब मैं ऑपोजिट कर रहा हूँ, तो अब मैं बैलेंस लेके आ रहा हूँ अपनी लाइफ में. इट डजंट वर्क लाइक. तो लगनी दोनों तरफ होती है पहले बेसिकली, फिर इंसान बीच में आता है, क्योंकि तब उसको समझ में आता है कि दोनों साइड को साथ में लेके कैसे चलना. So what is number 3 actually? What the term is? Sorry. What is number 3? What the term is? How do you? I mean, मिडिल पाथ जो वो कहना चाहते हैं, वो मिडिल पाथ कहना चाहते हैं, दोनों ही तरफ से एक्सट्रीम से. हाँ, मैं वो मिडिल पाथ कहना चाह, करेक्ट, मैं मिडिल पाथ कहना चाह रहा हूँ. तो मिडिल पाथ आदमी तभी ढूंढ पाता है जब उसने एक्सट्रीम एक्सपीरियंस कर लिए होते. यू विल truly experience middle path only when you have lived both extremes. So one time you were too timid, everybody was bullying you, सब दबा रहे थे आपको, ये सब कर लिया था, आपको लगा नहीं ऐसे नहीं जी सकते, दिस इज नॉट करेक्ट, यहाँ तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है. तो एक दिन वहां पे जब फटा बम, तो उठ के दूसरी तरफ चले गए. अब ये कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं बस अपना, मैं इतना ही देखूंगा, अपना ही करूंगा, नोबडी केयर्स अबाउट वेदर आई दिस और दैट, अभी मुझे खुद का ही देखना पड़ेगा एंड ऑल दैट. तो मैं दूसरे एक्सट्रीम में चला गया. दूसरे एक्सट्रीम में जाके जब रहता हूँ तो समझ में आता है कि लाइफ तो यहाँ भी नहीं सही चल रही है, प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी वैसे ही कोई अलग शेप और फॉर्म में आ रही है, बट मजा तो यहाँ भी नहीं आ रहा. तो फिर उस टाइम रियलाइज होता है कि
It was neither this nor that. It was situationally I had to choose कि किस situation में मुझको intimidate होना है और किस situation में मुझको intimidate करना है. तो ना तो इंटिमिडेट होना गलत था और ना ही इंटिमिडेट करना गलत है. पहले मैं दोनों को ही गलत और सही के एंगल से देख रहा था. जब मैं बैलेंस में आता हूं तो मेरे लिए सही और गलत खत्म हो जाता है. फिर इट्स ओनली आई विल डू व्हाट इज नीडेड. सो मेरे को अगर इंटिमिडेट होने की जरूरत हो रही है तो मैं इंटिमिडेट हो जाऊंगा. अगर मुझको इंटिमिडेट करने की जरूरत पड़ रही है तो मैं इंटिमिडेट करूंगा. लेकिन दोनों ही चीजें करते हुए मैं सही गलत के एंगल से नहीं करूंगा उसको. मैं सिर्फ कर रहा हूं क्योंकि वही करने की जरूरत है. दैट इज द बैलेंस. That's a wonderful thought. I think that's an extremely wonderful thought. मेरा आपकी बातों से यही conclusion है. So I'll be very honest with you. If you're dragging yourself into either one extreme or even a middle path or even another extreme for 10, 15, 20 years, मेरे हिसाब से वो भी एक कहीं ना कहीं एक डेंजरस सिचुएशन आ ही जाती है. बिकॉज आप कुछ हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम कुछ भी बोल लें, जितना मर्जी हम मोटिवेशन की भी बात कर लें, एक चीज बड़ी क्लियर है लाइफ में, इट्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी, हम अपने हालात के खुद जिम्मेदार हैं. सो आइदर वी कैन प्ले अ विक्टिम कार्ड फॉर इयर्स कि मैंने एक एक्सट्रीम देख लिया, दूसरा देख लिया, मिडिल पाथ पे आ गया. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हैप्पीनेस एंड सॉरोज. The sooner we realize it and the sooner we care less about so many things and overthinking, the life will be much more easier rather than reacting to small and small things. तो ये चीज मैंने काफी लेट अपनी लाइफ में सीखी. आई हैड माय ओन शेयर ऑफ ट्रबल्स, बट ठीक है यार, दीपिंदर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. अब उसमें मैं नंबर 3 पे जाऊं या 2 पर जाऊं या 1 पर जाऊं या 2.5 पे जाऊं, आई थिंक योर पॉइंट इज कुछ एब्सोल्युटली मैटर नहीं करता है. हाँ, फिर क्योंकि आपने सीख लिया है कि यू आर नाउ not attaching yourself to the situations, to the emotions. So it is about that. It is about how you attach yourself करेक्ट. and how emotionally intelligent you are. So the more emotional intelligence you build in yourself, the more you can start to handle those emotions for yourself and others. That's absolutely correct. Great. Thanks, Vipin. Thank you. Seema, thanks. Seema, your hand is up. You want to say? Seema, are you? Am I audible? Now you are. Huh? Yeah. Just to add to whatever you were discussing and Bender was discussing, I just can say to this thing about is that out of my experience, Akarma, you and Anamika knows my journey. So where Rupali is or many other people would be there. I used to juggle around a lot because I was aware about everything, most of the things that are happening in life, but I was not having any direction. So, I could understand what is happening, going to the open mics, but then it was like I used to be very participative also in the beginning. And I used to like try to be participative and be there in open mics to understand my issues. But motivation, जब तक call चलता था तब तक था. Then you used to struggle back in the life when I used to go back in the life after the calls and all. So I was not reaching anywhere. So the direction that I started getting was from your clarity call, that karna kya hai. And so from there the healing journey started. And जब मैंने unstuck करा, attachment style भी कर लिया, things changed. Definitely I could understand, but they were not changing as they would have. So मतलब 2 journeys ये करने के बाद मुझे लगा कि there will be relief from the things. But मेरा eye opener था और turning point था when I did that guided subconscious GSM workshop, and I actually went in a, I still remember, in a kind of a silence for 3-4 days because I was like, my most of the things were coming from there. अच्छा, उसके बाद भी मुझे लगा नाउ आई विल बी सेलिंग फाइन, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये है वो है. एंड देन आई रियलाइज कि अभी भी टेम्परेरी रिलीफ मिला है. आई हैव नॉट गॉट अ लाइक अ परमानेंट रिलीफ और आंसर्स
I'm still circling around in the circles only. So then when I did this the split wala, um, I don't know how to share it with people, but there are all whys gone. There is no why now. I can assure you that you'll be so confident in yourself doing whatever. You'll be taking accountability, ownership, everything. That all whys are there till the time you're not getting you're not digging in and you're not taking a step towards the right direction. You will be motivated for some time, but end of the day, I think I can only say with my experience, I wasted good years of my life and I have no regrets. And I also at the same time believe that it's a journey, so I had to learn some lessons hard way. But I think many people who come on the open mics, I can say that you can still save your time, and you can only see the change once you go through it. So, rather than juggling I hard, remember that you were talking about that the inner child reparenting not only helped you that, but also with your son. yeah, because I could reparent my child. When I went through that inner child reparenting, I can see my child self and myself. So I could reparent my child, my inner child. And at the same time, जो दिमाग का बत्ती या lit हुआ मुझे इस workshop से was this, that how can I save my child or reparent him with the issues that he may be facing because I have become single parent and we are going through a journey. So I think it's a great thing to do not only for yourself it but has for the it people has involved. multi-dimensional effects. It has multi-dimensional effects जो even I can't Yeah, predict क्योंकि it will be very different for everybody. So I will only go with the objective कि इस workshop में मुझको ये achieve करना है. But उसके अलावा जो लोगों को achieve होता है, that is very much personal क्योंकि yeah, सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें चल रही हैं एंड पीपल true. टेक अवे वेरी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अस. सो मेरा कोई ऐसा Yeah. ऑब्जेक्टिव नहीं था हीलिंग माइंड ब्लॉक्स में कि Hmm. यू आल्सो नो हाउ टू रीपेरेंट योर फिजिकल चाइल्ड. Yeah. But you used that knowledge and that experience to say, if I can do this for myself, for my inner child, then why can't I do this with my son also? So and it's absolutely correct. Means why can't you? Of course you can. But मेरा वो objective नहीं था. But then how you Yeah. use, वो ऐसे होता है ना कि मैंने तो एक हैमर बना दिया. अभी आप उस हैमर को कोई कैसे यूज कर रहा है, मैं वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ ना. मुझे ये पता है कि हाँ ये हैमर मैंने नेल ठोकने के लिए बनाई है, तो एटलीस्ट नेल तो ठोकेगी क्योंकि उसके लिए तो बनाई है. बट अब वो नेल ठोकने के अलावा लोग उससे और क्या क्या कर रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है. Yeah. True. 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 But it definitely helps a lot because if you start, untying the knots that you are knotted for so many long damn years, I think coming out on the other side is a very big thing because that should be done. I mean, we have all the time we waste circling in things, कि ये नहीं हो रहा, blaming others. But I think most important is taking a step towards your own healing because that's the key to have healthy relationships and everything. Because I think my perspective changed a lot with lot many open mics and workshop is that that question that Akarma you gave it to us. We never think that we should be the right partner. We always think we should get a right partner. But being a right partner is also a task because उसमें काम अपने पे करना पड़ता है. So जब अपने पे काम करे तो now lot of whys have gone. Most of them have gone. And this is all I wanted to share. Thank बहुत you so मेंटल much. बैंडविड्थ मिल जाती है ना जब सब हाँ, वायर्स ड्रॉप हो जाते हैं. तो वो जो कामनेस ढूंढ रहे होते हैं मेडिटेशन में या दारू की बोतल में या किसी चीज में, वो अचानक से ही मिल जाती है क्योंकि बेकार के क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गए. ये जो इनर चाइल्ड और रीपेरेंटिंग वर्कशॉप है उसके बाद in my life the biggest change I feel is there used to be like always a why to be very honest कि ये इसने ऐसे क्यों करा है, why that person has done this, why this person is like behaving like this with me, why they don't understand. That has vanished, I'll be very honest. And suddenly there is a lot of silence and there is a lot of
bandwidth for learning other stuff. Because inside me, um, there is a silence, there is a calmness, there is nothing like impulsiveness, which I think was coming more from a child. Now, the biggest change I could see is this, that I don't go and fight with the world, which I was doing, because my inner child was so wounded and it wanted to get validations from every third person I meet in my life, whether it is required or not. But now the child is in calm and composed state. So if somebody is saying something, I even don't respond. In the sense, I don't even write back. And, I uh, take my and I pause know and reflect. And I know that you are going through a very personally challenging situation, which we don't want to discuss here at this stage. But just as a thing कि I'm sure you can now relate कि अगर ये जर्नी पे नहीं हो रहे होते तो how the outcome would have been. अगर अगर ऐसे before और after अगर check करें तो what you तो are मैं going through सिर्फ right now, how या it would have been अगर ये सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं लाया होता और ये सब काम नहीं किया होता तो तो उसका सिर्फ it's एक already आंसर है, struggling as टेम्परेरी is. टेम्परेरी रिलीफ. It, या हाँ, सो आई I वाज know गेटिंग your टेम्परेरी रिलीफ. हाँ. But I'm saying कि your situation that you are currently going through, it's हम्म. challenging as is, है ना? वो तो वही या रहने वाली थी, वो challenges तो वही रहने वाले थे. लेकिन the state that you have come in, where you are a bit more silent from inside, वो होने के बाद भी ये situation जो है काफी challenging prove हो रही है, what you are going through, है ना? तो अगर वो या silence नहीं होती तो क्या होता? तो it was like I was going through so much of anxiety, so many panic attacks. So in a year's time, I can say that no doubt my situation is very challenging, but I go through that and I go to still that place where I feel कि अब क्या होगा, because it's like uncertainty of things which is not in my hand. But there is something inside me also tells me कि हम इसको संभाल सकते हैं. So now the split is this. So one split says कि हाँ है, मतलब that comes out, because that's again a kind of a, I think after split integration I feel कि now I know कि that split will come out because उसका reaction वही है. But the adult in me is able to handle it well, because my adult in me is like ओके ठीक है, अभी ये सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग, इसके थ्रू ही हम जा सकते हैं लाइफ में आगे. तो कामनेस आती है, थोड़ी सी एंजाइटी तो ऑब्वियसली, बिकॉज सर्टेन थिंग्स आर रियली स्कैरी इन माय सिचुएशन. But yeah, it has helped me a lot, I would say. There are many things that has changed suddenly. um I think I'll call myself that I've become a very mature adult. So I'm not in a need of मेरे अंदर से impulsiveness चली गई है, which is such a big thing for me, because my inner child wound was so bad that every third person saying something, I'm reacting big time. Now I'm in a silent zone. I don't even react in the sense कि वो किसी ने मुझे अगर कोई मैसेज सुबह कुछ गलत लिखा है तो मैं शाम को उसको जाके शायद पोलाइटली कुछ आंसर दे दूंगी. वो भी अगर मुझे लगेगा कि आई शुड गिव इट, कि ये इम्पोलाइट लगेगा. Otherwise, I just be in my zone. I don't know what is this. This is the only change, not only change, it's a very big change in me. I know myself like a version before and after. So it's very good. It's beautiful, and thank you so much again to you and Anamika, because and like I'm coaching myself, also learning so much, and it changes you from inside. Absolutely. And yes, we are providing this platform and this facility and all that. Um, but a lot of this goes on personal commitment and personal dedication also. क्योंकि शेयर तो हम बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, सुनते तो हमको बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग एक्ट करते हैं और जो लोग आगे उसमें कुछ करते हैं उनको ही चेंज दिखता है. और ऑन एवरी कॉल आई से द सेम थिंग कि my objective is not that you somebody should come to us and work with us only. No, my objective is to create awareness कि कुछ करने की जरूरत है. So go to anybody, take help from anybody, but take help, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो खुद से करने वाली नहीं है. This is not DIY. So don't waste your time and energy
and efforts and your life into this DIY thing. क्योंकि Yeah. आप नॉलेज तो ले लोगे बुक्स पढ़ के, गूगल से, दूसरों से बात करके, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? जो जो डॉक्टर, आप मेडिकल की बुक्स को पढ़ सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर रोज के 100 पेशेंट्स देख रहा है, साल के उसने 4-5 हजार पेशेंट्स देखे हैं, उसको जो 1 साल में एक्सपीरियंस आया है, कहाँ से लाओगे आप खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके, एक ही तो केस है जिसको आप डील कर रहे हो, सो यू डोंट इवन हैव द ब्रेथ ऑफ द एक्सपीरियंस अराउंड इट. सो डोंट डू दैट, टेक हेल्प. हमें चेयर चाहिए होती है तो हम मार्केट से जाके चेयर खरीद लेते हैं, हम कारपेंट्री का कोर्स नहीं सीखने लगते. तो just take help, take the right kind of help from right kind of people and get your life sorted. It's just too precious to waste in DIY activities and all that. So it's just not worth it. And I totally agree with you. Just not because I've taken, healing and done work with you guys. It's just out of experience again that I've done so much of spiritual shopping. उस समय what I have realized when I was saying it, that out of my experience I'd say कि don't waste your time and energy. We keep circling around, in the same patterns, same things, but we never take a step. So after wasting so many years, I could only say this much कि working तो अपने ऊपर ही करनी है, चाहे आप आज से 5 साल बाद करोगे या 10 साल बाद करोगे या करोगे ही नहीं, तो उसी चीज में स्टक भी रहोगे and you won't be able to come out because end of the day you have to work on yourself. तो हाँ, और ये भी एक चीज है जो मैं बहुत you सुनता हूँ, जो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगती है कि लोग ये बात बोलते हैं, पर काम तो हमें ही करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली काम आपको ही करना पड़ेगा. आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर थोड़ी दवाई खाता है आपकी जगह पे. सो ये मुझे सेंटेंस ही नहीं समझ में आता लोगों का कि काम तो हमें ही करना पड़ेगा. ऑब्वियसली आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन वो काम करना क्या है, वो तरीका क्या है, वो दवाई क्या है, कब खानी है, कैसे खानी है, उसको तो वही तो गाइडेंस लेने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, या डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई तुम खा लो, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये लो फीस. तो ये मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आता था लोगों का कि ये क्या बात होती है कि दे थिंक दे आर गोइंग टू अ कोच और दे आर गोइंग टू अ काउंसलर, तो एज इफ कि बस गोइंग टू द कोच एंड काउंसलर इज गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग. तो काम तो करना ही, और तो उनको ये लगता है अच्छा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा तो मैं खुद DIY कर लेता हूँ. ये कैसा लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आता. दवाई तो आपको ही खानी, तो आप घर में दवाई बनाने लगते हो क्या? आपको क्या कैसे मालूम है कौन क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, कौन सी दवाई किस टाइम पे कितनी डोज खानी है, क्या करना है, उसके लिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना. तो इफ यू डू दैट, देन इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? वो फिजिकल एलिमेंट्स के लिए है, ये मेंटल एंड इमोशनल एलिमेंट्स के लिए है. इट्स द सेम थिंग, सेम अप्रोच, सेम एवरीथिंग. व्हाई वी डू थिंग्स डिफरेंटली देयर एंड डिफरेंटली हियर, वो मुझे नहीं समझ में आता. तो इसलिए आई फील कि दिस अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. कि जाओ किसी के पास भी जाओ, आपके जो भी, you know someone, you trust someone, you prefer कि I want to work someone face to face and all that, do that, do whatever, but be open to take that guidance, be open to take that help, क्योंकि उसके बिना just wasting life. Rupali, your hand is up. You want to say something? So I think my question is, we had a wonderful discussion about all these attachment styles and everything initially. I mean, just before this. So my question is, you mentioned that there are these inner child who take the driving seat and they are driving the entire thing. So how can we, take control and rather not let that inner child take it further and you take control? So how can we do that? And second question related to the same thing, how can we get the like clarity, clear clarity about, like these are the red flags, these are the green flags, and we are not putting anything from our past experiences, like with this terminology. So these are my two questions, and if possible, I have another question. You can just check if it is related. So I do get attached very quickly in any single
thing that comes up new, I just get attached very quickly. So, is it a part of that preoccupied anxious, or is it something that is different, that is coming from my own personal baggage? So, these are my questions. Yes. So you attended the Unstuck workshop today. You've taken the first step, right? So Correct. you identified anxious preoccupied, correct? If I'm remember it correctly. Yes. Anxious preoccupied was the style. Huh? So um, we shared a video with you which talks about the anxious preoccupied के traits क्या होते हैं. So if you remember what the traits of anxious preoccupied is, Yeah. One was can you? about they get into relationship easily. So one Mhm. was that, and rest, like I cannot recollect everything right now, but I had seen ठीक है, that. फिर से सुन लेना एक बार. You have the link Okay. of the video. So Sure, sure. हाँ, watch, listen to it again. Listen to it as many times, only 10-12 minutes video. So listen to it and you will get the traits of it. तो अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर जो मुझसे उसका आंसर आपको मिल गया, क्योंकि यू जस्ट आस्क्ड मी कि आई गेट इनटू रिलेशनशिप वेरी क्विकली एंड दैट्स द ट्रेट ऑफ एंशियस प्रीऑक्युपाइड पर्सन, Yeah, I think so. It is coming from there. right? So it is coming from there. So this is what I was explaining before कि जब तक हमें इस बीमारी का नाम नहीं पता चलता है तब तक हम इस बीमारी को डिस्क्रिप्शंस की फॉर्म में डिस्क्राइब करते रहते हैं. ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. तो एक बार जब हमें बीमारी का नाम पता चल गया उसके बाद हम बस उस बीमारी के नाम को रिफर कर सकते हैं एंड देन वी कैन जस्ट क्रॉस चेक कि ये भी इसी वजह से हो रहा है, ये भी इसी वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो डू अ बिट मोर स्टडी ऑन एंशियस प्रीऑक्युपाइड स्टाइल एंड देन यू विल स्टार्ट टू सी कि अरे ये भी इसी. तो क्या है, वो जैसे एक वो ब्रांच है, तो वो जो वो ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, देयर इज टू मेनी फ्रूट्स कमिंग फ्रॉम देयर, बट वो सब कनेक्टेड इसी ब्रांच से ही है. सब कुछ एक ही चीज से ही कनेक्टेड है. बट आपको ऑब्जर्व क्या होता है, आपको अलग अलग फ्रूट्स ऑब्जर्व होते हैं, अपना बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, लेकिन फिर दिखने लगता है कि अरे हाँ ये तो ये सेम ही ब्रांच से तो कनेक्टेड है, एक ही चीज. तो अगर हमने ये ब्रांच ही काट दी तो ये सारे फ्रूट्स अपने आप ही गिर जाएंगे ना. तो मुझे Correct. एक फ्रूट को काटने की जरूरत नहीं है ना, एक एक फ्रूट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइफ के इंसिडेंट्स पे फोकस करते हैं. इंसिडेंट्स आर लाइक द फ्रूट्स. आपकी लाइफ में जो इवेंट हो रहा है, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ये क्यों कर दिया, व्हाई डू आई रिएक्ट दिस वे, व्हाई डू आई, ये सब फ्रूट्स हैं, ये सब इंसिडेंट्स हैं, ये सब इवेंट्स हैं. अब हम ये नोटिस करते हैं, ऐसे देखने से ना बहुत ज्यादा लगता है अरे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, क्योंकि हम जब इंसिडेंट्स और इवेंट्स पे फोकस करते हैं तो वो बहुत सारे लगते हैं कि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, अरे मेरे मैनेजर के साथ ऐसा हो गया, या मेरी वाइफ के साथ ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, मेरे फादर के साथ ऐसा हो गया. क्योंकि ये सब अलग अलग लोग हैं तो हमें लगता है ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स है. कि काम पे जो मेरे को दिक्कत आ रही है उसका मेरी फादर के साथ या मदर के साथ जो मेरे को दिक्कत आ रही है उसमें क्या रिलेशनशिप है, हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिखता है उसमें, कोई लिंक नहीं दिखता है, क्योंकि हमें लगता है वो तो काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, ये तो मेरी प्राइवेट लाइफ की प्रॉब्लम है, ये तो मेरी इस लाइफ की प्रॉब्लम है. तो हमको उसमें ना लिंक नहीं दिख रहा होता. एंड दैट इज ओके, बिकॉज you don't understand the depth of these things, so you will not see the link, and that is totally fine. If you don't see it, it's totally fine. There's nothing wrong with you. It's just the way it is. अभी मेरे को अगर कार के इंजन कैसे फंक्शन करता है, उसके इंटरनल की मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे नहीं पता ना एक चीज दूसरे से कैसे लिंक करती है. मेरे लिए तो, मैं तो बोनट खोलूंगा, मेरे लिए तो सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि क्या है ये सब. तो वो तो नेचुरल है, क्योंकि नहीं पता है कुछ तो वो चीज कॉम्प्लिकेटेड लगेगी ही. तो इट्स ओके इफ इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, बट अंडरस्टैंड कि वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब इवेंट्स हैं, ये सब फ्रूट्स हैं. तो हम जब एक फ्रूट खराब हो जाता है, हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं या उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो हम उस फ्रूट को बचाने की कोशिश करते हैं. कुछ करके हमने वो फ्रूट बचा लिया या कुछ भी कर लिया, तो क्या है, वो जिस ब्रांच से कनेक्टेड, अगर उस ब्रांच में कीड़ा लगा हुआ है तो दूसरा फ्रूट आएगा तो वो फिर से खराब आएगा. तो हम कितने हद तक इंसिडेंट्स पे फोकस करते रहेंगे. तो इसलिए हमारी जो अप्रोच रहती है अनामिफाई में, हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम इंसिडेंट्स और इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन सिर्फ इस एंगल से करते हैं ताकि हमें पैटर्न समझ में आए कि पैटर्न क्या है यहाँ.
मुझे इंसिडेंट्स और इवेंट्स को नहीं हैंडल करना है। मुझे आपको ये नहीं सिखाना है कि इसको ऐसे बोल देना था, इसको ये कर देना था, यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करना था। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई नो कि इसको ना रूट से जाके खत्म किया ना तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। यू आर एडल्ट एनफ टू नो कि लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, बात क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये सब आपको पता है, बट आप कर नहीं पा रहे हो, ये दूसरी बात है। तो मेरे को आपकी कैपेबिलिटी यहाँ लानी है कि आप कर पाओ, ना कि आपको ये सिखाना है कि आपको ये इस इंसिडेंट में ऐसे रिएक्ट करना था, उस इंसिडेंट में वैसे रिएक्ट करना था। वो मैं करता रहूंगा तो आपकी लाइफ, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी लाइफ भर बनी रहेगी। आपकी प्रॉब्लम, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, यू विल बी बैक टू मी आस्किंग कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। मुझे वो डिपेंडेंसी नहीं बनानी, मुझे आपको ये दिखाना है कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो वी सी कि ये सारे इंसिडेंट्स जो चल रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यू ऑपरेट फ्रॉम अ एंशियस प्रीऑक्यूपाइड स्टाइल। अब आप उसके बारे में थोड़ी स्टडी करोगे, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे, अरे हाँ मेरे काम पे ये प्रॉब्लम हुई थी ना, यहाँ भी ऐसा रिएक्शन आ रहा था, नाउ आई कैन सी कि उधर भी ये पैटर्न चल रहा था, या मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ था ना, उसमें भी ये हुआ था, तो आई कैन सी कि यहाँ पे भी ये पैटर्न। तो अब यू स्टार्ट टू सी द लिंक। पहले वो लिंक दिख नहीं रहा था, अभी मैंने आपको एक सीड कर दिया है वो थॉट कि ये लिंक है, अब देखो। तो आप जब अपने आप को देखने के लिए फोर्स करोगे तो आपको दिखेगा। जब वो लिंक दिखने लगेगा तो अब उसका कुछ करना नहीं है, अब आपको बस इतना जानना है कि अरे ये सारी की सारी चीजें एक ही तो ब्रांच पे हैं, तो मेरे को अलग अलग चीजें एड्रेस करने की बजाय मैं ब्रांच ही काट देती हूँ ना। एक ही काम करते हैं ना, कितने सारे फ्रूट्स तोड़ते बैठोगे, कितने सारे फ्रूट्स को ठीक करते बैठोगे, वो जो ब्रांच खराब हो चुकी है उस ब्रांच को ही काट दो। तो अब काम उतना बचता है कि हम सिर्फ उस ब्रांच को काटते हैं। अब हम उससे भी आगे का काम करते हैं। ब्रांच खराब है लेकिन ये ब्रांच कनेक्टेड तो ये खराब ट्री से ही है, तो ये ट्री की जड़ें ही काट देते हैं, क्योंकि आज आप ब्रांच काट दोगे कल वो ब्रांच फिर उग जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम उसकी रूट्स आइडेंटिफाई करके इस पेड़ की रूट्स को ही पॉइजन करके इसके रूट्स को ही खत्म कर दें, ताकि पेड़ जड़ से ही खत्म हो जाए। So that is the work that we are talking about. तो अब जो नेक्स्ट वर्कशॉप जिसके लिए यू हैव, आई थिंक यू हैव रजिस्टर्ड फॉर गाइडेड सबकॉन्शियस प्रोबिंग ना रूपाली? I have to, but I'll be definitely doing it. Okay, so that is the workshop where we will be now going one step further to find out कि ये रूट कहाँ है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। क्योंकि जैसे आपको अगर अगर आप अगर आपके घर में आपके बैकयार्ड में वीड्स हैं, तो उसको अगर आप ऊपर से काट दोगे और उसकी जड़ नीचे ही रह जाएगी तो थोड़े दिन में तो वो वापस उग जाएगा। और अगर आपने उसको ठीक से पुल आउट नहीं किया है, थोड़ी बहुत जड़ें छोड़ दी हैं, तो फिर से वहां पे ट्री बन जाएगा। तो हमको पूरा देखना होता है कि अंदर तक इसकी रूट कहाँ तक गई हुई है और वहां से जाके उसको हम बाहर निकालते। तो सेकेंड लेवल जो वर्कशॉप है विच सीमा वाज टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्शियस प्रोबिंग was that कि जिसमें she was saying कि I went silent for 3-4 days. So that is that when that realization hits कि ये कहाँ कहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं. So for someone to go in silence for some time and experiencing all these things is not abnormal. It's actually quite, क्योंकि ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है ना, इसीलिए तो इसको सबकॉन्शियस प्रोबिंग बोल रहे, क्योंकि आपको नहीं दिखती, कॉन्शियसली ये नहीं दिख पाती है हमको, और हम वो देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो उसको देखने के लिए एक सर्टन लेवल की प्रोबिंग की रिक्वायरमेंट है, एक सर्टन लेवल के क्वेश्चंस पूछने हैं जो आप खुद से क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, वो पूछ ही नहीं पाओगे अपने आप से वो क्वेश्चन। द माइंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, सो यू नीड अनदर पर्सन टू हेल्प यू। आप खुद अगर दलदल में फंसे हो तो आप नहीं निकल पाओगे, आपको कोई बाहर खड़ा हुआ ही लगेगा उसमें से बाहर निकालने के लिए। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को पुल आउट नहीं कर सकते उस दलदल में से। So you need another person standing outside to pull you out. So इसमें ये नहीं हम मान के चल रहे कि you don't have the capability to pull. Maybe you have a very good capability of pull somebody else out. कल को कोई और दलदल में फंसा होगा तो आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन खुद फंस गए हो तो हेल्प ही लगेगी आपकी।
That is what that workshop is, which is going more deeper into इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, ये अटैचमेंट स्टाइल कहाँ से आया है. Perfect, understood. Thank you. सी थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों में, ऐसा नहीं है कि सी करने के लिए हम ये सारी चीजें 2 दिन, एक 2 full day वर्कशॉप करें और वीकेंड पे करें और ये सारा कुछ हम करें, कोई बड़ी बात नहीं है. मेरे लिए ये सारा कंटेंट 2 दिन में डिलीवर करना कोई बड़ी बात नहीं, बट आप सब लोगों के लिए वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, कुछ कुछ चिपकेगा ही. इट विल बी जस्ट टू ओवरवेलमिंग. सो ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपको डॉक्टर ने एक 6 दिन का मेडिसिन का कोर्स दिया है और आपने अभी 6 दिन किसके पास टाइम है, आज ही खा लेते हो, आज वीकेंड है ना, आज ही खा लेता हूँ 6 दिन का. तो ऐसे नहीं होता है ना. तो इट हैज टू बी डन इन स्टेजेस. It has to be given in a way that you take this much, let it absorb, let it work, then I will give you the next dose, then I'll give you the next medicine. तो एक तरीका होता है काम करने का. इट्स नॉट कि सारा खाना है तो मैं आज ही खा लूँ और मेरे को जिंदगी भर खाना खाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नहीं होता. तो it has to be done in a way that we can absorb, we can digest, we can make some meaning out of it, we can derive some transformation out of it. क्योंकि ये learning नहीं है. These workshops are not meant or designed for education or learning. These workshops are for transformation. थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लर्निंग और एजुकेशन तो साइड बाय साइड हो ही जाएगा. अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया कि आपका स्टाइल जो है एंशियस प्रीऑक्यूपाइड है. अभी आप कर लो जितनी आपको लर्निंग करनी है. आप यू कैन रिसर्च ऑन गूगल एंड यूट्यूब एंड ऑल दैट. यू विल गेट प्लेंटी ऑफ मटेरियल टू नो मोर एंड मोर अबाउट इट. लेकिन नोइंग मोर अबाउट इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज. यू जस्ट नो. आपको अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है कि आपको डायबिटीज है, आप उसकी जितनी भी रिसर्च कर लो, आप अगर दवाई नहीं ले रहे हो तो डायबिटीज कहीं जा नहीं रही है. डायबिटीज ये नहीं बोलेगी कि अरे इसको तो बहुत मालूम है डायबिटीज के बारे में, अभी मैं चली जाती हूँ. तो ऐसा नहीं होता है ना. तो नॉलेज इज फाइन. ये अभी मुझे बहुत पता चल गया इसके बारे में. तो पता चलने से वो चीज कहीं जाती नहीं है, वही है. उसके लिए कुछ करना पड़ता है. So this is why these workshops are designed from transformation angle rather than from lecturing or education angle.